Welcome to YogiRam podcast. Today we have with us Dr. Yogesh, an internationally certified NLP trainer and transformation leader with a PhD in human resource management and over 20 years of rich experience. Dr. Yogesh has evolved from being an HR professional to an distinguished B school professor and now serves as a certified NLP trainer, coach, author, and public speaker. Dr. Yogesh is one of the select few in India certified by the prestigious American Board of NLP. He has trained under NLP masters like Dr. Richard Lander and Dr. John Grinder and has conducted over 100 plus training programs for diverse audience including corporate professionals, healthcare workers, educators, and entrepreneurs. His expertise spans across stress management, emotional intelligence, leadership development, and personal growth. With 16 international research papers and 5 books to his credit, he is dedicated to creating positive change through his work in human development. Today, he will share his insight on transforming lives through the power of NLP and personal development. Stay tuned for an enlightenment conversation with योगेश सर. वेरी वार्म वेलकम सर. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर योगीराम पॉडकास्ट. Thank you, sir. Sir, moving to the first question, please explain what is NLP in your words and what is the significance in personal development. So, first of all, let me thank you for being a wonderful host and giving me an opportunity to share a stage with you. NLP is a topic which is very close to my heart, and my entire life is based on that only. It's in 2008 I found out this particular concept, and since that I am practicing it, implementing it for myself, for other people. At that time, NLP was totally new at least in Indian market. It was totally new. आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों को NLP के बारे में मालूम नहीं है. So let's understand with a very basic simple terminology. NLP. N stand for neuro, L for linguistic, P for programming. Neuro linguistic programming. Now, once we understand these three things are totally from three different fields. लोगों को लगता है कि यार ये क्या है? एंड न्यूरो, आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से न्यूरो आता है. लिंग्विस्टिक इज अ लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट. नाउ वी आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और विच एवर लैंग्वेज वी आर कम्युनिकेटिंग, that language we understand. But here I am talking about the language of our mind. And programming is a word which came from a computer field wherein we have certain set of programs. Like if I type 1 plus 1 on my laptop, the answer will be 2. The same 1 plus 1 on your laptop, the answer will be 2. So that is a set result which we get if we give a right command. So NLP started with understanding the human mind, understanding the human brain, that if we can train our brain so that we get the right results, and that is what NLP is all about. It's understanding your own self. Neuro linguistic programming, आपके माइंड, आपकी लैंग्वेज. यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक बिट मोर इन द कमिंग टाइम, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज लाइक हिंदी और इंग्लिश और फ्रेंच और तमिल. It's all about the language of your mind. And believe me, if you can learn the language of the mind, you are the winner, you are the king, because you know the language. Now you can communicate with your subconscious mind and you can get the things done effortlessly. May it be health, may it be wealth, may it be relationships, may it be a career, business, whatever you want in your life, you can get it using your mind only. And NLP will help you in exactly getting that. Great. Sir, moving to the next question and a personal one. How has your experience as a B school professor, a successful professor, teacher, trainer, influenced your approach into NLP training, and how was the transition from an HR professional, B school professor to an NLP trainer and coach? So what exactly happened is, like, I started my journey as a HR professional. Then during that journey, I also was inclined towards giving guest lectures at various colleges. So I was working in HR, and on the weekends I used to give guest lectures to the colleges. I used to teach students, and there I understood that this is something which I love. Corporate world was definitely fantastic, but this was something, as we say, there is some calling.
So that was like, for me, that was a calling that let me get into the academics. And then I enter into academics, leaving my corporate world, and I turned to become a B school professor. So ये B school professor की journey करते हुए, then there were thousands of students who passed by in last so many years, and teaching to the students, I understood that okay, that is one level, but let me go to a level up. Let me go back to the corporate now, not as a HR professional, but as a trainer. And that journey started when I understood that how can I train people? I can train people by using my own mind, and I can train people on certain topics. तो उसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक एक्सप्लोर किए, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, and then I understood there is something known as self development, there is something known as human development. उसके फील्ड में मुझे काम करना है, because I understood, I have seen that so many people are there who are struggling in their life. बहुत सारे लोग अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को करियर में प्रॉब्लम है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो किसी के रिलेशनशिप्स खराब है. ऊपर से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अच्छे दिखते हैं, दे आर लिविंग लाइक अ गुड लाइफ, व्हाट वी सी. बट when I talk with them, when I communicate with them, when they come to my training program, I understood that they are suffering a lot, they are facing a lot, they are, even though they are financially well off from the outer world, but inside they are facing a lot of money blockages, inside they are facing a lot of challenges. And that was the shift, I would say, which took me from HR to a trainer. And then I, as I said, I learned so many things, and out of that I picked up NLP as the mainstream for my teaching and coaching. Great, great, sir. Great, sir. Sir, getting back to the NLP, the core topic, please share some common misconceptions about NLP that you encounter in your journey. Okay, so before, as I said, let me go back to my own journey. In 2008 जब मैंने शुरू किया था, कोई नहीं था ये ऐसे NLP and all those things, they were totally new. And I somehow stumble upon one of the program wherein I learned that there is something known as power of subconscious mind. There is a conscious mind, there is subconscious mind. वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं. And I was like super excited to understand that there is so much power in me. Let me explore that. And I started reading books. उस वक्त 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 7-8 के करीब. वहाँ पे internet was not that much popular. Things were not very easily available, books were not easily available, so many hurdles were there. But because of that curiosity, I found out multiple ways. I did so many courses, I read so many books. जो लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल थे, खुद के लाइब्रेरी में, बाहर के लोगों के लाइब्रेरी में, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेजेस, उनके लाइब्रेरी में जाके मैंने बुक्स इशू करना चालू कर दिया, रीड करना चालू कर दिया. एंड देन आई अंडरस्टूड that there is something which is there in me. If I know how to operate that, I can be the winner. And then I learned Reiki, I learned dowsing, hypnotherapy, okay, color therapy, bit of numerology, all those modalities I studied. But I found out कि हर एक modality में एक problem है, और वो ये कि इस बाकी सारी modalities they are dependent on something else. Say for example, कोई आपको बोलता है कि आपके नाम में X ऐड करो, Y ऐड करो, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो उसमें 8 आ रहा है, उसमें 9 आ रहा है, तो ये नंबर आपके लिए लकी है, अनलकी है. ऑल दिस थिंग्स which are not in our control. My date of birth is not in my control. My date of place of birth is not in my control. Whatever is my name that I love, I don't want to put one more E or one more G to that particular name. So, and all these things I felt. Wear a particular crystal healing वाले बोलते हैं कि you wear a crystal and all those things will happen. I also did all those modalities. Why? Because I wanted to learn कि exactly किस तरीके से चीजें काम करती है. Then when I went into the NLP field, I understood that it is my mind only. It is my mind only. If I work on that, things will change. जैसे like एक example के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो आपकी कार जो होती है उसका इंजन अगर सही है तो कार सही चली जाएगी. तो हमारे बॉडी एंड माइंड का जो इंजन है, इफ दिस इंजन इज वर्किंग वेल, बिलीव मी एवरीथिंग विल वर्क वेल. And later on, now you ask about the misconceptions about NLP. People think that if I wear a crystal, if I change a name, if I do some numerology, something will happen. Ultimately, let me explain. It is all about your belief system. You believe
that because I have changed my name, now something miracle will happen. Now you believe because I'm wearing a crystal, now something else would happen. It is your belief system. Even in the medical field also, they say there is something known as placebo effect. There are n number of experience which are being carried out by the doctors out there in developed countries, wherein they gave a sugar pill to a patient and said that this is the painkiller and the pain is gone. So how the pain is gone? The pain is gone just by the thought process, not by the pill. Understand? Your belief systems will work more powerful than any other else modality. People have got some misconceptions about NLP that this is not backed by science or this is latest. Let me tell you, NLP is 1970. NLP got out in the world in the year around 1970. Now, this is not very old science, I would say, whereas some other things are pretty old. Whatever is latest, we always want to go for it. So, NLP is latest. Whatever are there, there could be misconceptions. I agree and I accept that there could be misconceptions. But once you understand that modality and once you apply that modality, you see the result, and there are many results which you get within a very short span of time, maybe as good as 15 to 20 minutes. If you're going to get results like this, then I'm sure you're going to believe it. So whatever misconceptions are there, you always can connect with me, and I would be more than happy to solve all your misconceptions. Great, sir. Sir, moving to the next question, you have been trained into the NLP from the world-class trainer, and you have also trained many peoples. So please explain, please elaborate how you tailor your training program to meet the needs of diverse client. So as I told, once I got into this particular field, I started reading books. I started going to some seminars. I started learning within the country whatever was possible. At that time, money was issue. I was not making too much of money, and I remember at in 2008, somebody asked me 1 lakh rupee to get a training for 5 days. So 1 lakh rupee in 2008 was a big amount. Right. I decided that okay, this is something which is like somebody is charging so much. It means there must be some value in it, and I need to pay that value. But at that time, money was not there. Later on, whatever books I read, I started applying. I started getting result. And in that, some miracles happened in my own life. Like one of the miracle I would like to mention over here, that my salary got tripled in a matter of 6 months. In a matter of 6 months, my salary got tripled, and I shifted my job, and everything happens so smoothly, so miraculously. And with that, I was able to travel to London to learn NLP from Dr. Richard Bandler, who is the co-creator of NLP. So the person who invented NLP, I learned from him. So if you are learning from the source, definitely you are going to get something much more valuable than anything else. And till today also, it is my strong belief system that whatever you have to invest, you have to invest in yourself. If you invest in yourself, the returns on that investment would be far more than any other investment. May it be land, may it be gold, may it be stock market, may it be anything. You will be making 10, not 10, maybe 100 or 1,000 times more money what you have invested if you invested right. And because of this, I was able to understand the concepts fundamentally very clear. And because of that fundamentals are clear, now I am in a position to cater to each and every client. It could be a corporate client, it could be a housewife, it could be a person from finance department, or it could be a person from HR or marketing or an entrepreneur. Irrespective of what the person's background is, I am in a position to solve all their queries. And that's how the NLP helped me, because I learn from the right people, and that is what is making my training effective day by day. I'm not claiming that I'm the best. Yes, I am also improvising day by day by learning NLP, by applying NLP on myself on regular basis. Great, sir. Great, sir. Sir, talking about more about the implementation, in your opinion, what is the most powerful NLP technique for personal growth? There are so many techniques for personal growth. I would like to name a few by which you can have the results. Like one of the technique is anchoring, which is very useful to change the state of mind. NLP basically works on your state of mind. We always say that if your state of mind, अगर आपकी मानसिक दशा, मनस्थिति अगर आपकी ठीक है, तो आपकी परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाएगी. But if your state of mind is not right, just go back to your
time wherein your state of mind was not right, आपका मूड अच्छा नहीं था या आपकी state of mind खराब थी या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टेकन रॉन्ग डिसीजंस और उसका रिपरकेशन आपको बहुत बुरी तरीके से देना पड़ा. So NLP works on the state of mind. That is one of the thing. And as I said, anchoring is one of the technique which I would like to mention over here, which can help you to get into that state of mind with your own at your own time, with your own will. आप जब मन चाहे तब आपकी state of mind आप बदल सकते हो. There are n number of techniques. There are techniques to remove your past painful memory. There are techniques to remove your physical pain. There are techniques to get into a money frequency. There are techniques to have a wonderful relationship by building rapport. There are techniques by which you can improve your communication. There are techniques by which you can improve your sales. There are n number of techniques, and I can't say that this is like good or this is bad. All the techniques are wonderful in its own way. Depend ये करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है. If you want to say improvise on your relationship, there are certain different set of techniques. If you want to make money, there are certain different set of techniques. If you want to heal your body, there are certain different set of techniques. So there are techniques for everything, and ultimately, as I said, the source, if you work on the source, if you work on the root cause, if we work on the roots, there will be wonderful fruits. That's what I would say. And those techniques of NLP, they always work on the roots. Great, great, great. Sir, moving to the next question and talking about more spirituality, how do you integrate spirituality into your coaching and training session? Okay, spirituality is something different. NLP is something different. But as and when I progress myself as a person, when I went ahead in this journey, I understood that all these things are good. May it be NLP, may it be hypnosis, may it be whatever modality we are talking about. All these modalities are good. But so many people, they say that wherever the science ends, the spirituality starts at that point in time. Very true. जहाँ पे साइंस खत्म होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है. और अगर ये बात समझ में आ गई कि ये स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट डायमेंशंस टू दैट. बट यस, आई इंटीग्रेट spirituality in my NLP training to some extent, wherein that is going to help or that is going to boost the impact of the people, whatever techniques we are doing in a very simple way. For me, spirituality could be like doing a 10 minutes meditation. 10 minutes a peaceful meditation, that itself is a sign that you are keeping your mind cool and you are thinking about maybe something, you are thinking about the god, you are chanting om namah shivaya, or you are doing whatever. So my training always starts with a 10-minute meditation. That is how I started integrating. Initially I was not, but later on I understood that this is something which is very important, and I got a suggestion from so many participants that this is something which is like one of the greatest takeaways of the day, that we did that 10-minute or 15 minutes meditation. Great. So that is how I try to integrate spirituality. Of course, on spirituality I want to do, or I want to create a different work altogether, so that I will be more focused only on that aspect along with NLP. Talking about more technicality and the hypnosis, you said. So, does self hypnosis play a role in NLP, and how it can be benefited for an individual? So hypnosis is one of the beautiful tool out there for self development, self growth. Rather, in NLP we teach something known as Milton model. Now, what is Milton model? Milton model is a work which is been done by डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन, हु वाज द ग्रेटेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट एट दैट टाइम. उस वक्त के वो बहुत जबरदस्त हिप्नोथेरेपिस्ट हुआ करते थे. एंड द डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर एंड डॉक्टर जॉन ग्रिंडर, दीज टू पीपल, द इन्वेंटर्स ऑफ और द को क्रिएटर्स ऑफ एनएलपी. ये स्टोरी एक ऐसी है कि डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर वाज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर जॉन ग्रिंडर वाज अ प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेज. दिस टू पीपल, अ स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर, दे वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया. प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद their wavelength was matching, so they said that why don't we do something more. And then they were fascinated by a thing कि why some people are so successful. कुछ लोग बहुत अच्छे सक्सेसफुल क्यों होते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते. तो उन्होंने जो सक्सेसफुल नहीं होते, they ignore that, forget about. There are people in the society who are super successful, so
They started observing those people. They made a list of those people. उस लिस्ट में कुछ नाम थे, जैसे वर्जीनिया सतिर was one of the name. She was a family therapist. Milton Erickson was another name, was a hypnotherapist. So these people, these two people, they went to Milton Erickson and they asked कि you are so successful hypnotherapist कि बाकी के लोग भी hypnotherapy करते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलती, आपको सक्सेस कैसे मिली? हाउ हैव यू गॉट सक्सेसफुल? देन and they said that we want to observe you, we want to role play with you, we want to learn from you. And Milton Erickson was generous enough. He said, okay, you can come and sit in my ऑफिस, मैं जो भी कुछ करता हूँ काम वो आप देख लो। वो देखने के बाद उनको पता चला कि मिल्टन एरिक्सन एक तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं। मिल्टन एरिक्सन इज यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज ही इज गेटिंग रिजल्ट। We call it as a vague language, hypnotic language. Okay. And based on that language, these two people, co-creators of NLP, they created a model known as Milton model. Similarly, as I mentioned, Virginia Satir. So Virginia Satir was a family therapist. वो family counseling करती थी। उनके भी जो आते थे लोग, husband, wife, झगड़ा हुआ, dispute हुए, divorce हो रहा है, all these things. तो Virginia used to ask question इन अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मैनर। अब वर्जीनिया के जो क्वेश्चंस हुआ करते थे वो बहुत ही स्पेसिफिक थे। उसको बोला जाता है आज की तारीख में मेटा मॉडल। वी कॉल इट एज अ मेटा मॉडल विच इज अ वेरी स्पेसिफिक मॉडल। और वो मिल्टन मॉडल से एग्जैक्टली अपोजिट है। दोनों के मॉडल एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट है, बट दोनों के दोनों मॉडल एनएलपी सिखाती है। बिकॉज बाय मेटा मॉडल यू गेट डिफरेंट सेट ऑफ आंसर्स एंड दैट लीड टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। By Milton model, you get different set of answers. So coming to your question, hypnosis and NLP. NLP के इतने बड़े ऑर्बिट में hypnosis is a part और उसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन को। So self hypnosis or any other hypnosis is a wonderful tool by which you can create your future in a best possible manner. ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जो टेक्निकलिटी उसको समझाया आपने, दैट वाज रियली ग्रेट। पर्सनली आई फील दैट कि जो बेसिक से टेक्निकलिटी को इजी लैंग्वेज में, लेमैन्स लैंग्वेज में बताने का जो हुनर है, दैट इज रियली गुड। पर्सनली आई फील दैट एंड यस ऑडियंस विल आल्सो फील द सेम। Sir, moving to the next question and more about NLP techniques, what challenges do people commonly face when trying to implement a NLP technique in their life? आज का जमाना जो है वो 2 minute मैगी वाला जमाना है। Everybody wants quick result. Right. See, there are modalities which will give you quick result, no doubt about it. NLP is one of the modality which is famous for quick results. But at the same time, as you ask, what are the challenges? Challenges क्या आते हैं? लोग कुछ चीजें सीखते हैं और सीखने के बाद उसको 8, 10, 15 दिन, महीना भर प्रैक्टिस करेंगे, they will get results and then now they will say that now I know the technique, whenever I will require I will use it. Okay. और जब आपको सही में जरूरत पड़ती है, by the time 6 months have passed by, 1 year have passed by and you forget all the techniques. आप सारे टेक्निक्स भूल जाते हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो चैलेंजेस ये है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, भले आप कुछ भी सीख जाओ, if you don't practice, then results will not be there. So one of the thing is that people don't practice. Again, I'm not saying that you have to practice on daily basis कि आप 2 घंटे 4 घंटे don't know. There are so many people out there. What I tell to my participants कि आप जाओ सोसाइटी में, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें हैं। किसी को पैसे की तकलीफ होगी, किसी को हेल्थ की तकलीफ होगी। हेल्प पीपल मे बी फॉर फ्री, मे बी फॉर पेड, वॉट एवर द केस मे बी। शुरू में तो फ्री में काम कीजिए, उसके बाद पेड में काम कीजिए, लेकिन once you do that, you will be continuously practicing that technique. There are so many techniques and over a period of time you become so master that you now mix 2 techniques together, 3 techniques together and then you create your own technique and ultimately you give the result to the client. तो ये सब होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया तो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये चैलेंज आएगा कि there could be certain participants who do not do practice and because of that they are left out. And the best part is what I do, like currently I'm doing a coaching for one of the corporate client. They did their practitioners program and after that they signed up for 1 year coaching program. So every month what we are doing is we are coming together and we are practicing on 1 day in a month. We are practicing whatever we learn in the practitioner program. तो उससे होता यह है कि आपने 1-6 दिन में इतना सारा सीखा, it becomes very difficult to digest. But now every month
In the month of Jan, we did certain set of activities. In the month of Feb, we did certain set of activities. March we are going to do in the next week. So ये सब जब होगा, step by step you are learning it again. And that is what I also prefer to do with all of my students, that once you do a course with me, there would be a hand holding, so that every month we come, every month we do the practice, and so you are not left behind. And that's what challenges people might face, but this is my way to overcome that challenge. ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर. सर इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा रिलेटेड. व्हाट एडवाइस, व्हाट टिप्स, व्हाट पॉइंटर्स वुड यू गिव टू समवन हु इज न्यू टू एनएलपी, जो ये सीखना चाहता है, जो ये प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करना चाहता है, बिसाइड प्रैक्टिसिंग और डेली जो प्रैक्टिसिंग जो आपने अभी बताया, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और क्या क्या पॉइंटर्स हैं सर, इसके बारे में प्लीज बताएं. ओके, सो जिसको एनएलपी सीखना है वो तो पहले आई ऑलवेज वुड रिकमेंड यू कम विद अ क्लीन स्लेट. डोंट गो टू सो मेनी प्लेसेस, डोंट रीड सो मेनी बुक. होता यह है कि जब बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास जब आते हैं कि सर हमने उस वीडियो में ऐसा देखा था, इस वीडियो में ऐसा देखा था, सर इस बुक में ऐसा पढ़ा था. सी, एनएलपी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एंड देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु माइट, आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट नो, और the only thing is that if you want to learn, check the credibility of the trainer. Is the trainer certified? Is he associated with certain body? Like I am associated with the American Board of NLP, which is the world's largest community of NLP, and they certify people with a rigorous exam as a practitioner, as a master practitioner, as a trainer, as a master trainer. So we don't become a trainer or a master trainer just like that. There is a rigorous practice. So if you are new in the field, जैसे आप किसी भी स्टूडेंट को अगर एमबीए करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो वो कैसे कॉलेजेस देखता है, यूनिवर्सिटी देखता है, उसको स्कैन करता है, उसको समझता है. इसी तरीके से एक बार इसको देख लो, समझ लो, उसके बाद उस ट्रेनर से बात कर लो वन ऑन वन. अगर आपका उसका वेवलेंथ मैच होता है, then definitely go and join his or her program. I'm not saying come to my program, I'm saying go and join their program. The first and foremost thing is that you should have a will, that I want to change my life for better. मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है, मुझे मेरी लाइफ को अपलिफ्ट करना है. अगर ये आपके दिमाग में है तो you are at the right place, because NLP will give you clarity, NLP will give you confidence, and that is how you will go ahead in your life. ग्रेट सर, ग्रेट सर. सर इसी कंटेक्स्ट में, और जैसे आपने अलग अलग मॉडलिटी के बारे में बताया, सो कैन यू प्लीज एलॉबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द NLP? Law of attraction and NLP, people sometimes they get confused कि क्या दोनों सेम है. My answer is definitely not. Law of attraction अपनी जगह पे है, NLP अपनी जगह पे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोगों का ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स यू सिंपली हैव टू थिंक अबाउट मर्सिडीज and sit on the sofa, eat popcorn, watch Netflix, and a Mercedes will be there in front of you. So this is what is the misconception of law of attraction. कि ask, believe and receive. आपने मांगा यूनिवर्स से, आपने बिलीव रखा और आपको मिल गई चीज. तो ये गलत तरीके से लोगों ने परसीव किया. सिखाने वाले लोगों ने जो सिखाया और उसका जो मीनिंग निकला वो बहुत ही अलग था. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अलग लेवल पे काम करता है. NLP is action oriented. So when we say that we have to say erase a past painful memory, when I have to change my limiting belief, अगर मुझे अपनी limiting belief के ऊपर काम करना है, अगर मुझे मेरे आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है, तो मैं सिर्फ बैठ के सोफे पे अपनी आंख बंद करके I will not just think, I will have to do some inner work. So NLP is all about inner work. I'm not saying a lot, but yes, there is a work. And NLP ने उसको क्या किया है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक ढांचे में डाला है. तो होता यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मुझे इनर वर्क करना है, मतलब करना क्या है. सो NLP विल गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड इट इज नॉट लाइक दैट वन फिट फॉर ऑल. से फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फोबिया है तो फोबिया क्योर का अलग टेक्निक है. किसी की लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, आई कांट मेक मोर मनी, और आई कैन मेक ओनली एक्स अमाउंट ऑफ मनी, आई कैन ओनली मेक 5 lakhs a month, आई कांट मेक 10 lakhs a month. अगर ये लिमिटिंग बिलीफ है तो 5 lakhs to 10 lakhs कैसे जाए, उसके लिए अलग टेक्निक है. somebody is having a issue with say relationship, कि मेरा मेरे हस्बैंड से नहीं जमता, मेरा वाइफ से नहीं जमता, मेरी बॉस से नहीं जमता, कलीग से नहीं जमता. अगर ऐसा कुछ है आपका रिलेशनशिप के रिलेटेड इश्यूज, देन देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स. सो NLP इज अ वास्ट सब्जेक्ट, एंड ऑलमोस्ट any problem there is some or other technique as a solution. Whereas law of attraction, it is been observed that you simply ask
and you believe, and automatically you will get it. So there are some people who might have got the result from the law of attraction, but there are majority of the people who are just struggling to get the right mindset. उनको ये पता ही नहीं है कि सिर्फ मैं बैठ के आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा, आई एम से 100 kg, आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा ईटिंग पॉपकॉर्न एंड ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, एंड आई एम थिंकिंग कि यार मेरा वजन कम हो जाए just by thinking. It will not happen. You have to take some action. उसके लिए आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, बाहर दुनिया में जाके एक्शन लेना पड़ेगा. सो एनएलपी विल मेक यू एक्शन ओरिएंटेड. एनएलपी विल ensure that you take right set of action so that you get the result as fast as possible. Great, sir. Great, sir. Sir, getting back to the learning NLP, and you're learning from the international master, world class master. So please share your experience, how it was, what was the initial difficulties, and how you overcome them. और क्या क्या सर, क्या वाक्य हुए, क्या क्या चीजें हुई सर, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. So there are so many countries I traveled and I learned from so many masters. एक example के तौर पे let's take one memory which I just remember of London. लंदन में जब मैंने डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के साथ एनएलपी का प्रोग्राम किया था, उनके साथ सीखने गया, सो आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स अनकॉन्शियसली. लंदन वी से इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल द कल्चर्स, सो मेनी पीपल कम ओवर देयर. वैसे हमारे ट्रेनिंग में भी देयर वर पीपल फ्रॉम एटलीस्ट 50 डिफरेंट कंट्रीज, 50 अलग अलग कंट्री से लोग आए थे. एंड when I interacted with them, just by interacting with those people, lot of my limiting beliefs got dissolved on the go. Why? Because you are with those kind of people कि जहां पे आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है, आप वो लेके जाते हो कि मनी मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट और समथिंग लाइक दैट. जस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद दोस पीपल द थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट. रही बात लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स की, आई स्टिल रिमेंबर द क्लास यूज्ड टू बी फुल ऑफ all these participants and we were not allowed to have our pen or diary inside our training room. ट्रेनिंग रूम के अंदर पेन अलाउड नहीं था, डायरी अलाउड नहीं था. हालांकि आई वाज वेरी एक्साइटेड टू टेक ऑल द नोट्स व्हाट एवर डॉक्टर बैंडलर इज सेइंग सो दैट आई कैन गो होम, स्टडी, अप्लाई ऑल दैट स्टफ. एंड आई वाज सो सरप्राइज कि अरे पेन अंदर लेके जाना नहीं है, डायरी अंदर लेके जानी नहीं है, तो फिर मैं लिखूंगा कैसे? The very first day, the very first morning, Dr. Bandler said that whatever we are going to do, I'm going to directly communicate with your subconscious, and all the thing, whatever I'm going to share will be directly going to your subconscious, because I will be teaching you through hypnosis, and that is the way he taught us. And believe me, today also, even after so many years pass by, today also all those things are there in my memory, and whenever required, that folder gets open and that memory just flashes and then I get along. तो ये होता है कि आप जब किसी सही मास्टर के साथ सीखते हो तो आपको पेन और पेपर की सही में जरूरत नहीं है. उन्होंने डायरेक्टली री इम्प्रिंट कर दिया है हमारे माइंड के ऊपर, एंड दैट इज फॉर लाइफ लॉन्ग. द मोर वी यूज इट, द मोर वी बिकम बेटर एट इट. उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अभी हमने देखा, इफ यू डोंट यूज इट, लूज इट. अगर आपने यूज नहीं किया तो आप लूज करोगे. जैसे हम बोलते थे कि एज अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स थ्योरम दैट वी वेर हैविंग टेल्स, हमको टेल्स हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, हमने वो यूज नहीं किया, अभी नहीं है. तो इफ यू डोंट यूज इट, इट यू विल लूज इट. नाउ हियर आई लर्न हाउ टू यूज ऑल दोस थिंग्स. द experience was amazing, and today also I go out, I learn, and my major investment is today also on myself, nothing else. Great, sir. Great, sir. Sir, taking the next question, what is your approach to coaching individual facing addiction or past trauma? Because इस तरीके से या जो पास्ट ट्रॉमा की वजह से या एडिक्शन की वजह से मेनी टाइम्स इट क्रिएट्स अ बैरियर. सो सर, हाउ डू यू हैंडल, हाउ डू यू हेल्प, हाउ डू यू गाइड देम? तो जैसे अभी मैंने बोला कि एनएलपी स्टेट के ऊपर काम करती है, एनएलपी आपके माइंड सेट के ऊपर काम करती है. तो यहाँ पे आपने जो बोला एडिक्शन या ट्रॉमा, ये दोनों में एक कॉमन चीज है, और वो ये है कि किसी न किसी रीजन की वजह से वो चीज ट्रिगर हो जाती है. से फॉर एग्जांपल व्हेन आई वर्क विद एडिक्शन पीपल, जैसे कि सर जैसे ही सैटरडे आता है वो ट्रिगर हो जाता है कि चलो आज वीकेंड है, विल हैव सम ड्रिंक्स. ओके, दैट सैटरडे बिकम्स अ ट्रिगर. किसी के पास कुछ मेमोरी है कि यार जब कभी मुझे उस बंदे का फोन आता है, अचानक से आई फील सो एंग्री, आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड, आई फील
out of control. So that person becomes a trigger. The moment I see something, the moment I hear something, the moment I smell something, तो ये सारे ट्रिगर्स आपके नोइंगली अननोइंगली आपके माइंड में बैठ चुके हैं. से फॉर एग्जांपल रेड लाइट अगर हमने देखा रास्ते पे, तो दैट इज अ ट्रिगर कि वी हैव टू स्टॉप द व्हीकल. ये एक यूनिवर्सल ट्रिगर है. तो आप इंडिया में हो या आप लंदन में हो या दुबई में हो या स्विट्जरलैंड में हो, ट्रिगर रिमेन्स सेम, दैट व्हेनेवर आई सी अ रेड लाइट आई हैव टू स्टॉप माय कार. That's the trigger, and that is like good one. But at the same time there could be so many negative triggers, so many bad triggers. So ये addiction या all these kind of things, it is the root causes. या तो आपने किसी चीज के बारे में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया सैटरडे देखा, ट्रिगर हो गया, 4 बज गए, 4 बजते ही मुझे चाय पीनी ही है, ये एक 4 o'clock का ट्रिगर हो गया. द मोमेंट देयर इज अ 4 in your mind and body, automatically it will give you signal कि it's 4 o'clock, it's time for a tea. So the question here is, this trigger is okay. Can I remove that trigger using NLP? Definitely yes. Can I install a new trigger? Definitely yes. Can I install a trigger कि सुबह 5 बज गए मुझे उठना ही है? Definitely yes. Can I install a new trigger कि every single day I at least have to walk for 5 kilometers or do maybe a half an hour का yoga or exercise, whatever? Definitely we can install a trigger. Can I install a trigger to eat say lot of green vegetables, lot of salad rather than eating junk food? Yes, we definitely can. तो NLP का अप्रोच जो होता है या मेरा जो अप्रोच है वो यही है, to find out what is that trigger. If that trigger is something, in most of the cases लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ ट्रिगर है. उनको लगता है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल, रोज तो 4 बजते ही रोज तो मुझे चाय पीनी है. ऐसा नहीं. दैट इज अ ट्रिगर, दैट इज नॉट योर कॉन्शियस call. Are you consciously aware कि it is 4 o'clock, let me have a tea? No. You simply unknowingly you go and you have a cup of tea because it is 4 o'clock. So NLP will try to understand what is the trigger and we work on that trigger and we create a different neural pathway. तो अगर आपका न्यूरल पाथवे किसी का है कि सैटरडे इवनिंग को मुझे ड्रिंक लेना ही है, तो instead of that drink I can create a different neural pathway of maybe having a soup rather than having a liquor. Let's have a soup, let's have maybe a chas, let's have maybe a cold drink for that matter, or a cold coffee. So you always can create a different neural pathway. Remember we said neuro linguistic programming. तो ये आपके जो न्यूरॉन्स है उसको आपने एक लैंग्वेज में प्रोग्राम करके रखा है कि लैंग्वेज क्या है, सैटरडे आ गया ड्रिंक ले लो. ये आपकी इंटरनल लैंग्वेज है और उसकी वजह से कुछ लोगों को इमेजेस आते हैं, कुछ लोगों को आवाज सुनाई देती है, कुछ लोगों को फीलिंग होता है. ऑल दिस थिंग्स हैपेंस. व्हाई? बिकॉज इट इज सैटरडे. नाउ दीज आर अबाउट एडिक्शंस एंड ऑल. अभी ऐसे ही ट्रिगर्स हमारे मनी के बारे में है. इफ यू आस्क समबडी कि व्हाट एवर इज योर इनकम एंड हाउ to 10x your income, or imagine you have got 10x your income what you earn per month. अगर आप per month से 10 लाख कमाते हो, अचानक से आपने 1 करोड़ कमाना चालू कर दिया, what will happen? People are not ready to even create a visual representation. Right. वहां पे भी blockages है. So there are lot of blockages, lot of problems. Addiction एक बात है, past trauma एक बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं which we need to understand and rectify if they are not helping us. If there are certain good patterns, definitely good to go. कि आप सुबह 5 बजे उठते हो, वॉक पे जाते हो, that is a good pattern, good to go. But if it is not, then you have to take some professional help. Sir, moving into more technicality and a common question, communication skills are most important. ये ट्रेनर्स के लिए भी जरूरी रहती है, ये जो टीचर्स हैं उनके लिए भी जरूरी रहती है, एंड यस आजकल बच्चों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ दे कम्युनिकेट बिटवीन अमंग देमसेल्फ, पेरेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, एंड द कम्पिटिटिव वर्ल्ड. सो हाउ NLP can help, NLP can guide, NLP can improve the communication skills. So when we say neuro linguistic programming, इसमें जो language ये जो part आता है, that is all about communication. Because language किस चीज की है? communication की तो language है, लेकिन यहाँ पे हम language बात करते हैं आपके mind के language की. We are talking about your mind language. You are not talking about anything else. So if you really want to improve the communication, you have to talk in the language of the next person. अब NLP में हम बोलते हैं कि लैंग्वेज दूसरे बंदे के लैंग्वेज में बात करना, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो मुझे हिंदी में बात करनी है, या तो वो फ्रेंच में बात कर रहा है तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं, तो फिर मैं कैसे करूं? नो. अकॉर्डिंग टू NLP देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल. वी कॉल देम VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक.
कुछ लोग विजुअल्स होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं, और ये तीनों लोग अपने अपनी एक वोकेबलरी लेके चलते हैं। एक विजुअल बंदा हमेशा बोलेगा कि मुझे ये दिखाओ, कि शो मी दिस, कि आई वांट टू सी दिस। एक ऑडिटरी बंदा बोलेगा लेट मी टेल यू। तो ये जो उनकी लैंग्वेज पैटर्न है, अगर आपने ये एनएलपी सीख लिया, अगर आपने ये बीए के टाइप ऑफ पीपल सीख लिए, you will be in a better position to understand other people better. Firstly, you will understand yourself better. आप खुद को पहले अच्छे से समझोगे, उसके बाद you will understand other person better, and because of that, now you are in a better position to communicate. So maybe एक स्कूल का बच्चा अपने टीचर से अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा, मे बी एक एम्प्लॉय अपने बॉस से अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा, मे बी एक मार्केटिंग वाला बंदा दूसरे कंपनी से अपना प्रोडक्ट अच्छे से बेचेगा, बिकॉज ही नोज हाउ टू बिल्ड रैपो। रैपो बिल्डिंग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेक्निक्स इन एनएलपी, कि जहाँ पे ये सारी चीजें हम इकट्ठा करते हैं एंड वी टीच हाउ टू बिल्ड रैपो। तो लैंग्वेज, if you are only talking about English, Hindi, Marathi, no, that is not the language which we are talking about. We are going beyond that. We are understanding the words, we are understanding the eye movement, we are understanding the tonality, we are understanding the vocal sound up down, all these things in totality, and then we try to communicate with the person so that we get a good rapport. And that's where NLP help people to make or to become a better communicator. Great. Sir, moving to the next question, discussing about how you help or guide people, how you deal with resistance from clients during the coaching session. बहुत बार ऐसा होता है कि वो समझना, उस प्रोसेस में आना, एंड टू गेट इनटू दैट फ्लो, दैट फ्रीक्वेंसी और दैट स्पीड आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वो जो रेजिस्टेंस रहता है उसको सर आप कैसे डील करते हैं? इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन, और ये आपकी टेक्निक्स आप क्या क्या यूज करते हैं सर, इसके बारे में है। सो एनएलपी के कुछ प्रीसपोजिशंस है, उसमें से एक प्रीसपोजिशन ये है कि इफ द क्लाइंट इज रेजिस्टिंग, इट इज द साइन ऑफ लैक ऑफ रैपो। रेजिस्टेंस इन क्लाइंट इज द साइन ऑफ लैक ऑफ रैपो। अगर क्लाइंट रेजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मेरे में प्रॉब्लम है, मैंने अच्छा सा रैपो नहीं बनाया। एनएलपी इज सो ब्यूटीफुल that it say that you have to change. No other person in the world is going to change. कोई दुनिया चेंज नहीं होने वाली, लोग ऐसे ही रहेंगे। आपको उसके साथ रैपो में आना है, आपको उसके साथ रैपो बिल्ड करना है, तब जाके ये होगा। So if the client is resisting, it means the practitioner need to change the approach. मानो ये हो सकता है कि वो अभी जैसे मैंने बोला कि there are 3 types of client BAK. There is a possibility that the client is visual and you are talking in a auditory language. He is asking ki show me the work what you have done. Say let's take example of not me and Kochi. Let's take example of say a boss and an employee. Lack of rapport. एक बॉस है कि जो विजुअल है और एम्प्लॉय ऑडिटरी है। बॉस इज सेइंग कि शो मी द वर्क व्हाट यू हैव डन। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, शो मी द वर्क, यू नीड टू सी समथिंग। एंड द एम्प्लॉय बीइंग एन ऑडिटरी, ही इज सेइंग कि सर लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव डन टुडे। ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये बोल रहा है कि मुझे एक काम दिखाओ, और ये बोल रहा है कि सर मैं बताता हूँ। नाउ इमीडिएटली बॉस गेट्स एंग्री एंड ही सेज दैट तुम तो सिर्फ बातें बनाते हो, तुमने तो काम कुछ किया नहीं, you have not done anything, and that is why you don't have any evidence. Whereas this person might have done the work, but instead of showing it, he prefer to say, and he'll say, नहीं सर मैंने तो काम पूरा किया है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने सुबह 8 बजे ये किया, 9 बजे ये किया, 10 बजे ये किया, दिखाओ, I want to see. राइट। नाउ यहाँ पे कौन गलत है? ना एम्प्लॉय गलत है, ना बॉस गलत है, आपके अप्रोच में प्रॉब्लम है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द अप्रोच। यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। वन इज कम्युनिकेटिंग इन ऑडिटरी लैंग्वेज, वन इज कम्युनिकेटिंग इन अ विजुअल लैंग्वेज। अगर आपके लैंग्वेज में गड़बड़ है तो आप दिन भर बातें करते रहो, सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे बट सॉल्यूशन विल नॉट बी देयर। सो इफ यू रियली वांट टू गेट सॉल्यूशन, लर्न द लैंग्वेज what the other person is speaking, and with that automatically rapport will be built and there will be no resistance होता है, बहुत सारे लोगों के आस resistance होता है, तब ये rapport building बहुत काम की चीज है। उससे भी आगे जाके if some client, there are certain client who don't come on their own, ऐसे भी कुछ client होते हैं कि जो जिनको कोई लेके आता है कि ये मेरी हस्बैंड, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सुनते नहीं है, whatever. So in that case, if the client is not willing and he's been forced to come for a coaching session, nothing will happen, because I cannot thopify my things on him. अगर मैं उसको बोलता हूँ कैसे, for example, if I tell him to visualize, imagine an apple, and he's not imagining.
मैं उसको बोलता हूँ कि इमेजिन करो आपके माइंड में एप्पल, तो अगर उसके इंस्टेड ऑफ एप्पल ही इज थिंकिंग अबाउट एन एलिफेंट, I can't do anything. So if as a client somebody wants result, he need to give 100% and the coach need to give 100%. It is not 50-50. 50% मैं देता हूँ, 50% आप दे दो, ऐसा नहीं होगा. मुझे 100% देना पड़ेगा, उस क्लाइंट को भी 100% देना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा. Right. Great, 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 sir. Sir, talking more about client, talking more about participant, talking more about training, please share memorable feedbacks, please share memorable incidents जो आपने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, और कुछ मजेदार वाकया, कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स फ्रॉम योर ट्रेनिंग, फ्रॉम द एक्सपीरियंस. So many things are there. I'm just figuring out which to share, क्योंकि हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होता है, हर एक बंदे के लिए कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होता है. एंड ओके, let me share something about a person. He was in one of my training and he was stuck up at a level कि उसका जो बिजनेस टर्नओवर था वो 1 CR के ऊपर जाता ही नहीं था. He was struggling. He started his business recently, 2-3 years हो गए. Business turnover नहीं जाता था and he wanted to make it 5 CR, but he was not doing it. After doing NLP, he got, the first thing is that he got clarity. He understood how to build rapport. He understood where is the problem he is facing. उसने क्या problem face किए, किस तरीके से वो गलत approach में था, and all those things once he learned, then he understood the mistakes which he was doing and rectified those mistakes. And the very next year, he said that, sir, now my turnover is 3.5 CR. For the last 2 years, I was struggling to go beyond 1 CR. It was not possible for me. But just by implementing certain things, in 1 year, from 1 CR to I jumped to 3.5 CR. And now I am not aiming for 5 CR, but I am aiming for 15 CR. So that's the power. That's the power of shift. ये एक आपका माइंड शिफ्ट हो गया तो there are n number of things. और एक एग्जांपल याद आ रहा है इसके चलते. there was a person who is a senior bank manager. This was a program in Mumbai. तो हुआ ये था कि उनका और उनके अंकल का कुछ there was some dispute, family dispute, and they were not talking to each other for last around 15-20 years. This person, this bank manager, इनका एज अराउंड 55 के आसपास था और ऑब्वियसली उनके अंकल जो थे वो अराउंड 80 के आसपास थे और इतने सालों से वो बात नहीं कर रहे थे. लेकिन जब एनएलपी का एक रीअलाइनमेंट ऑफ रिलेशनशिप का एक सेशन उनके साथ हुआ तो ही सेड कि आई वेंट टू माय अंकल्स होम. मैंने अपने वाइफ को फोन करके बताया कि मैं आज डिनर पे नहीं हूँ. And then straight away after the training he went to the uncle's home and uncle auntie ये like senior citizen they were there and they were shocked कि ये बंदा कैसे आ गया. Initially इन्होंने बोला कि उनको लगा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ या तो कुछ झगड़ने आया हूँ, something like that. But he said कि I just want to say sorry for everything and I just want to apologize for my behavior whatever I did. तो मुझे सॉरी बोलना था आपको, उसके लिए मैंने आया. And these three people they cried for 10-15 minutes. That is what he said कि हम सिर्फ रोते रहे. And then he realized कि अब अरे आज मेरा एज 55 है, उनका एज 80 है, तो मेरा नंबर आ सकता है, उनका नंबर आ सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई भी ऊपर जा सकता है. तो why to take all that anger with us when we are traveling? तो कोई जरूरत नहीं है. तो हमने ये सारे इश्यूज यहीं के ये रिजॉल्व कर दिए. एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल आई जस्ट रिमेंबर. सर, क्लाइंट की आपने बात करी, आपने उनके एक्सपीरियंस की बात करी. सो व्हाट आर द कॉमन पैटर्न्स दैट यू ऑब्जर्व इन क्लाइंट्स हु अचीव देयर गोल सक्सेसफुली? So there is a pattern, I call it as ABC, not in a order but in a different order. The order is different. तो ABC ये क्या पैटर्न है जो हम समझ लेते हैं. फर्स्ट इज सी. इट इज नॉट ए बट फर्स्ट इज सी एंड दैट सी इज clarity. Those people who are successful, they have got absolute clarity exactly करना क्या है लाइफ में. Second is B, that is they believe in themselves. They have got a strong belief system. And the third is A, that is they take action. So we can call it as a CBA instead of ABC. It is the other way around, CBA. So the people who are successful, they have got ample clarity कि this is what I want to achieve. It might be in terms of money, it might be in terms of health, it might be in terms of business growth, it might be in terms of career growth. किसी भी एरिया में आपको क्या चाहिए, ये अगर आपके पास क्लैरिटी है
So clarity is power. So from confusion to clarity, NLP will take you, or NLP will help you from creating a clarity from the confused mind. Second is NLP will help you to create a strong enough belief systems. If you are believing, as now just now we discussed few minutes ago, that people they have got this numerology or they have got these crystals and all those things. So these are all, according to me, these are placebo effects. कि just because मैंने ये particular अंगूठी पहनी है, just because मेरे पास एक crystal है, just because I am wearing a white shirt or a black shirt or this color is like lucky for me. तो ये सारा जो है वो belief system का काम है. अगर आपकी belief system strong है तो automatically you will take a different set of actions and the results will be definitely good. So whatever successful people you will see, you will always see this CBA pattern. They are clear, they have got strong enough belief system and they take action towards their goal. सर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में थोड़ा सा एक्सटेंडेड मैं पूछना चाहूंगा. सो जो एनएलपी के हेल्प से एक बिहेवियरल चेंज होता है, तो हाउ टू सस्टेन, हाउ टू कंटिन्यू, वो जो कंसिस्टेंसी है वो उसके लिए क्या टिप्स हैं? So as just now we discuss about the consistency as well, कि लोग सीखते हैं लेकिन वो consistent नहीं रह पाते, and that is why they don't get the results and they say that this particular modality is not good. The problem is not in the modality, the problem is in your consistency. If you are a gym member and you don't go to gym, सिर्फ मेंबरशिप का कार्ड है आपके पास, मेंबरशिप का वो आईडी कार्ड है, लेकिन आप जिम जाते ही नहीं हो, या तो जिम जाने के बावजूद वहां पे अगर आप मोबाइल देखते बैठे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स. तो उसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए द बेस्ट पार्ट ऑफ एनएलपी, यू नो व्हाट इट इज, द टेक्निक्स आर वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी प्रोफाउंड. सिंपल टेक्निक्स है लेकिन बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स है, और उन सारी टेक्निक्स को करने के लिए आपको टाइम बहुत कम लगता है. सो मेजरली जो बाकी की मोडालिटीज है या अदर कुछ अगर आपको करना है तो शायद आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़े, और उसके चलते यू विल बी इन अ पोजिशन कि यार कौन करेगा. लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आपको दिन के 10 मिनट निकालना है, तो इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक आउट 10 मिनट्स फॉर योर ओन डेवलपमेंट? डेफिनेटली नॉट. इफ आई से कि अगर आपको हफ्ते में 1 घंटा निकालना है आपके खुद के लिए और रेट्रोस्पेक्ट करना है पूरे हफ्ते को, तो क्या हम हफ्ते का 1 घंटा नहीं निकाल सकते? जस्ट 1 hour a week. People spend ample amount of time watching Netflix and watching YouTube and so many things. तो अगर हम कॉन्शियसली इस चीज के बारे में काम करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा. तो टिप तो यही है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव अ डिजायर. जो अभी हमने एबीसी की बात की उसमें डी एक आता है, वो डिजायर आता है. तो आपकी डिजायर होनी चाहिए कि भाई मुझे ये चीज करनी है, मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ के लेके जाना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ बदलाव चाहिए. ये अगर आपके पास डिजायर है तो डेफिनेटली यू विल टेक अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्शन. Definitely you will be consistent, definitely your beliefs will be something different, and that is how you are going to get the results. So in consistency I would only say ki the techniques of NLP which you will be learning if you join, those are so simple and so powerful कि बहुत सारे टेक्निक्स तो ऐसे है कि आपने एक बार वो पैटर्न डाल दिया तो शायद आपको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े. एक बार वो पैटर्न आपका ठीक तरीके से बैठ गया तो शायद आप उस पर्टिकुलर चीज को दोबारा करेंगे नहीं करेंगे. अगर आपने किसी चीज को छोड़ा है तो आपने वो छोड़ ही दिया है, या किसी चीज को चालू कर दिया है तो आपने चालू ही कर दिया है. Whatever a good habit you have started, you will always be in that habit. And there is another rule which say that if you do something for 90 days, do or don't do whatever. अगर किसी ने किसी बुरी आदत को छोड़ा है, मानो किसी ने किसी को लिकर छोड़ना है या किसी ने किसी को जंक फूड छोड़ना है, और अगर आपने 90 दिन तक वो जंक फूड नहीं खाया तो ऑटोमेटिकली अ न्यू न्यूरल पाथवे इज गेटिंग क्रिएटेड एंड दैट बिकम सो स्ट्रांग कि आगे चल के आपको शायद उसकी इच्छा ही ना हो, या आप खाए भी तो इतना सा खाए और उसका कुछ इम्पैक्ट ना हो. तो ये सारी चीजों के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि हैंड होल्डिंग होना बहुत जरूरी है. कि अगर आपके ट्रेनर के साथ हैंड होल्डिंग है, मंथली जैसे हमारी मीटिंग होती है, एवरी मंथ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, यू डू अ वर्क, यू डू योर होमवर्क, यू पुट इट इनटू ग्रुप, एंड दैट बिकम्स अ पॉजिटिव peer pressure, and that's how you become the winner of your own life. Sir, moving to the next question and more about training and coaching, what do you find the most rewarding being an NLP trainer and coach? So the most rewarding thing is at the end of the day I have that satisfaction apart from anything else. The money I make or whatever, those all things are secondary.
The primary thing is there is a positive change in somebody's life. जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि 20 साल का जो उनका दुश्मनी था, 20 साल का जो झगड़ा था, वो केवल एक दिन के सेशन में उनका रिजॉल्व हो गया। तो उससे और सेटिस्फाइड चीज क्या हो सकती है कि जो हंसी, अभी मैंने तो देखा नहीं उनकी हंसी, द स्माइल ऑफ दैट 80-year-old fellow, it is $1 billion smile because of that particular thing which got happened. Somebody who was stuck up at 1 crore as the turnover, he got to 3.5 crore, and the kind of satisfaction, the kind of happiness he can give to his family, उनकी फैमिली को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऑल दिस थिंग्स आर मोर देन रिवॉर्डिंग। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में रोते हैं बिकॉज उनके कदों के ऊपर जो बोझ था, जो बर्डन था, जो निगेटिविटी थी, वो सारी की सारी दूर चली गई। नाउ दे आर सो फ्री, एंड दैट इटसेल्फ गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लॉट ऑफ रिवॉर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड या एनी अदर रिवॉर्ड। इससे ये रिवॉर्ड इतने कई गुना ज्यादा है कि I just can't put it into words. Those are amazing rewards, amazing rewards. Great, sir. Great, sir. Sir, moving toward the practical tips and more technically, जब मैं इससे बात करूं कि please share some practical tips for practicing self hypnosis, या कैसे वो अपने लिए benefit कर सकता है for the beginner, for the general people. Okay, so hypnosis, of course, आपको सीखना पड़ेगा. We can't just have a tip on hypnosis, or you can read a book, you can watch a video, but it is always better to learn hypnosis from somebody. बेसिकली इन हिप्नोसिस व्हाट हैपेंस इज, लोगों का एक ये मिथ मैं दूर करना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि हिप्नोसिस का मतलब मैंने अपना कंट्रोल दूसरे किसी को दे दिया, अब वो जो चाहे वो करेगा। दोज आर स्टेज शोज, स्टेज हिप्नोसिस वी कॉल दैट। एंड वहां पे होता यह है कि वी हैव एंटरटेनमेंट। सो द रियल हिप्नोसिस और क्लिनिकल हिप्नोसिस, इफ वी टॉक अबाउट, it is not about entertainment, but it is about the changing patterns, changing your behavior. So if you really want to study hypnosis, the first and foremost thing is that you need to do a self control. आपका आपके thoughts के ऊपर control लाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं strongly recommend करूंगा कि आप किसी भी टाइप का एक मेडिटेशन जरूर करें। हर दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम आपको मिलता है, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के 3 फेजेस है मेरे हिसाब से। आई कॉल इट एज मेनी टू वन एंड वन टू नन। सो दैट इज, देयर आर मेनी थॉट्स इन आवर माइंड। बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बोला जाता है कि एवरी सिंगल डे वी थिंक अबाउट 60,000 थॉट्स, 60 to 70,000 थॉट्स we get every single day. Now out of those thoughts, how many are good, how many are bad, positive, negative, ये तो अलग बात है। लेकिन इतने सारे थॉट्स का हम करते क्या है? We go like haywire and then we don't do anything, and that is what meditation help you from many to one. तो आप क्या करते हो मेडिटेशन में? हम जैसे चैंटिंग करते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंट कर लिया, ओम का चैंट कर लिया, किसी भगवान का चैंट कर लिया, या कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोल लिया कि आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम improving day by day, whatever, one single statement. So from many thoughts you come to one thought, and from one thought एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस थॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस थॉट के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, and your mind will become thoughtless. And with that thoughtless mind, now you connect to the universal energies and you get so many answers just like that. So hypnosis सीखने से पहले I would say कि अगर ये फाउंडेशन अगर आपने कर दिया, तो the thing would be so very easy. In hypnosis, what we do, we go into the relaxed state, and as we go into the relaxed state, we start giving commands. We start giving commands to ourselves, the commands what we want. तो उस रिलैक्सेशन के लिए, उस रिलैक्स स्टेट तक जाने के लिए आपको, अगर ये आप कर सकते हो 10 मिनट का मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन चुन लीजिए विच यू फील सुटेबल, विथ म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक, वॉट एवर द केस में भी, बट एंश्योर कि यू आर अगेन डूइंग इट कंसिस्टेंटली। अगर आपके पास 5 मिनट है, रोज के 5 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, रादर देन मैं हफ्ते में एक दिन आधा घंटा करता हूँ, दूसरे दिन 1 घंटा करता हूँ, और अगले 10 दिन कुछ करता ही नहीं। दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट। उससे अच्छा कि एक बंदा जो रोज का 5-5 मिनट भी करता है, ही विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट, रादर देन समबडी हु इज haphazardly doing something. So to answer your question, I would say self hypnosis का foundation, first control your mind, और उसके लिए simple technique is do any form of meditation. Sir, moving to the next question, how has NLP evolved over the years and what future trends do you foresee? So जैसे अभी हमने डिस्कस किया NLP
की शुरुआत हुई 1970 से। तो 1970 में जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर रिचर्ड बैंडर, जॉन ग्रिंडर ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उनको ये एक क्वेश्चन था कि व्हाई सम पीपल आर सो सक्सेसफुल। तो उन्होंने मॉडल करना चालू कर दिया और उसी मॉडल को खुद के लाइफ में डालना चालू कर दिया, सो दे गॉट द सेम रिजल्ट। से फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody इज वेरी गुड एट मेकिंग अ चॉकलेट केक, और अगर उसकी रेसिपी मुझे मिल जाती है तो मैं भी उसके लेवल का चॉकलेट केक बना सकता हूँ। नॉट मे बी नॉट 100%, बट एटलीस्ट आई कैन रीच टू 70%, 80%, रादर देन आई डोंट नो रेसिपी ऑफ चॉकलेट केक, तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। तो उसमें शायद बहुत टाइम लगेगा, बट somebody इज एक्सपर्ट एट इट, आई एम जस्ट मॉडलिंग इट। तो एनएलपी ये मॉडलिंग करते 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 इतनी इवॉल्व हो गई, और आज इन वेस्टर्न कंट्रीज वी आर सो lucky that there are so many people who are using NLP in all the areas, may it be politics, may it be military, may it be corporate houses, may it be entrepreneurs, may it be startups, everybody is using NLP. इंडिया में अभी ये शुरू हुआ है। नाउ पीपल आर एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, उनके कानों पे ये नाम तो आ रहा है कि एनएलपी करके कोई चीज है और वो सीखनी चाहिए, उससे कुछ फायदा होगा। ये अभी अभी लोगों में अवेयरनेस आ गई। तो आई सी एनएलपी इज अ ब्राइट फ्यूचर। अगले कम से कम 25-30 सालों के लिए तो डेफिनेटली देयर विल बी सो मच ऑफ डेवलपमेंट, देयर वुड बी सो मेनी पीपल वी रिक्वायर एज अ सोसाइटी की जिनको एनएलपी की नॉलेज है और वो लोगों की मदद कर सके। द क्वांटम ऑफ पॉपुलेशन व्हाट वी हैव एज अ इंडियन पॉपुलेशन, देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया हु आर लाइक कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम। और आज के तारीख में सबसे ज्यादा अगर आपको पैसा कमाना है तो एक ही तरीका है, आप लोगों की मदद करें। इफ यू हेल्प अदर पीपल, इफ यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू मेक मनी। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट और वन मोर डायमेंशन टू दैट, कि जैसे लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, चैट जीपीटी आ गया तो इससे जॉब चला जाएगा, ये होगा। डेफिनेटली देयर वुड बी सम जॉब लॉसेस इन द टेक्निकल फील्ड, बट एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप लोगों की मदद करते हो, लोगों के माइंडसेट के ऊपर काम करते हो, तो उसके लिए तो आज तक तो रोबोट नहीं बना और आगे चल के बनेगा या नहीं, बिकॉज आपको उनकी भावनाएं समझनी होगी, आपको उनके इमोशन समझने होंगे, कि जो एक मैन ही समझ सकता है, मशीन नहीं समझ। एंड दैट इज वेयर आई सी देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन द फील्ड ऑफ एनएलपी। अगर आप आज भी एंटर करते हो तो अगले 25 से 30 साल आप काम कर करके थक जाओगे, इतना काम है अवेलेबल। तो आई वुड अर्ज दोज पीपल हु रियली वांट टू लर्न, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर। इवन इन द कोविड टाइम ऑल्सो वी हैव सीन कि लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सेल्फ हेल्प के ऊपर, सबसे ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर काम किया रादर देन एनीथिंग एल्स। तो दैट इज समथिंग विच इज लाइक फंडामेंटली रिक्वायर्ड, एंड इंडस्ट्री इवॉल्व होते जा रही है। लोग जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़े, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो और आपके साथ आप सोसाइटी की मदद करो, एंड दैट इज मोर रिवॉर्डिंग देन एनीथिंग एल्स। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ कॉमन वन, और ये मैं हर प्रोफेशन से, हर गेस्ट से पूछता हूँ, हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एज ए ट्रेनर, as in being into your family and helping people? So I don't have a segregation of personal and professional. I just have a life and I'm enjoying it. That's how I operate from. Because once you make a compartmentalization that this is my personal and this is my professional, it is a life. ये life है, और ये personal professional उन लोगों के लिए होता है कि जो मजबूरी में काम करते हैं। they have to go to office, they have to do the work. So something, if you are burden कि यार मुझे ईएमआई पे करना है, ये करना है, उसके लिए चलते मुझे काम करना पड़ेगा, तो आपको पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। those people who make their profession as their playground, then they don't have to be worried about their personal or professional life. Yes, I do give a lot of time to my family. We have fundamentals clear कि कब मेरा टाइम है, कब उनका टाइम है, और ये सारी चीज करते करते if you are enjoying your work, so there is nothing as such ki you are burdened or something like that. You are just enjoying the life. Even though morning 5 o'clock I am taking session, or even though at 11 o'clock 11 p.m. I'm taking a session, I'm enjoying my life. So there is no question ki what is personal and what is professional. You just enjoy your life because you are loving what you do and you are doing what you love. So you are just blissfully enjoying the life. That is what I would say. Great, sir. Great, sir. Sir, moving toward the end of the podcast and taking another important question. ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे और इसके आंसर के लिए वेट कर रहे होंगे. So, what are some ways to cultivate growth mindset
या ये मैं बोलूं कि हाउ अ पर्सन कैन enhance leadership skill? Very good question, and this question even I also encounter from so many people. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हमें ग्रोथ का मतलब समझना होगा. What do we mean by growth? Most of the cases, growth means money, more money. That is what is the perception of the people. लोगों का perception growth के towards ये है कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तब मेरी ग्रोथ होगी. कितना चाहिए, they are not clear. Once you earn 1 lakh, you want 2 lakhs. Once you earn 2 lakhs, you want 5 lakhs. Once you earn 5 lakhs, you want 10 lakhs, and it keeps on and on and on. So when we talk about growth, NLP का ये मानना है कि एक होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी कार है और कार के जो 4 टायर है, एक टायर में आपने 100 पॉइंट हवा भर दी, दूसरे टायर में 30 पॉइंट हवा भर दी, तीसरे टायर में 50 और चौथे टायर में 5, तो हाउ दैट जर्नी वुड बी. यही ग्रोथ है ना. आज के तारीख में ग्रोथ का मतलब क्या? एक मेरा जो एरिया है मेरे लाइफ का, पैसा, मनी, तो उसमें 100 पॉइंट एयर है. दूसरा है मैं एरिया दैट इज लाइक हेल्थ, उसमें 5 पॉइंट है. क्यों? क्योंकि मुझे हेल्थ के लिए ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है, या तो मुझे फैमिली रिलेशन के लिए टाइम ही नहीं है क्योंकि मैं पैसा इतना कमा रहा हूं और उसमें इतना बिजी होते जा रहा हूं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, कि ये बाकी सारी चीजें करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है. So once you say growth, I would always give this example of a car. So a car journey would always be very good if all the tires are having equal pressure. So you are having a good health, you are having a good wealth, you are having a good relationship, you are having your time, you are loving what you do, you are doing what you love, and at the same time you are contributing to the society, you are doing something to the society, you are growing internally, you are growing spiritually. ये सारी जब आप करते हो, that is what growth means. So if you are asking from the point of view of growth, how can I make more money? Yes, money is one of the important parameter, no doubt about it. और उसी parameter को लेकर के I have created another program called as Neuro Money Gym. So जैसे हम जिम में जाते हैं बॉडी वर्कआउट करने के लिए, वैसे न्यूरो मनी जिम में हम अपने न्यूरॉन्स के ऊपर काम करते हैं कि जो मनी मेकिंग न्यूरॉन्स है. एंड that is like, I can understand money is very important for everybody, but growth, once we say growth is not only about all this thing, growth is beyond money. So अगर आपको growth mindset cultivate करना है तो आपको बैठना पड़ेगा. in our session we make people write. There is a structured way, there is a format in which they need to write down all these things, and at the end of the day, once they draw that picture, I ask them to draw a specific circle, and once they draw that circle, we call it as the व्हील ऑफ लाइफ. तो एक बार वो व्हील ऑफ लाइफ उन्होंने बनाया, उनको ही पता चलता है कि यार मेरी ग्रोथ हो रही है मनी के मामले में, लेकिन रिलेशनशिप में मैं बहुत कमजोर हूं. किसी का उल्टा हो सकता है कि कोई हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, इतना हेल्थ जिम कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं कमा रहा. या तो कोई अपने रिलेशन में बहुत उलझा हुआ है कि यार मैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये वो, बट he is forgetting the health, he is forgetting the wealth. That is also not a growth. So growth doesn't mean you are focusing only on one aspect. The entire life should be holistically developed, and that is what I would say growth. तो अगर ये ग्रोथ माइंडसेट आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले ग्रोथ को समझना पड़ेगा कि, और उसमें भी जैसे मैंने बोला कि यू हैव क्लियरिटी. If you are having a clarity, then you will take action. Once you become clear कि मेरी ग्रोथ में फाइनेंसेस कमजोर है, मेरे ग्रोथ के साइकिल में मेरी हेल्थ कमजोर है, मेरे ग्रोथ के साइकिल में मेरे रिलेशनशिप कमजोर है, तो आप उस चीज के ऊपर ध्यान दोगे और ज्यादा उसमें ग्रो करने की कोशिश करोगे. तो इफ यू रियली वांट टू कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट, डेफिनेटली गेट इनटू this particular cycle so that you are aware and you are clear what exactly you want, and accordingly you can definitely take action by changing your belief system and putting forward your desired actions and desired goals. Sir, moving to the last question and yet most important question, please recommend, please share resources and the courses that you teach. So interested person in learning about NLP, सो सर आपके क्या क्या कोर्सेस हैं, हाउ दे कैन कनेक्ट विथ यू, एंड सीखने के लिए क्या क्या पॉइंटर्स उनके लिए चाहिए, सर इसके बारे में प्लीज बताइए सर. Definitely. So those people who are interested in having their growth, those people who are interested in making more money, having a happy life, having a fulfilled life, I would always recommend that they should learn these modalities. I'm not saying they should learn NLP only. There are so many modalities कि जो आपको आगे चल के, जैसे मैंने बोला कि NLP करते करते नाउ आई एम बिकमिंग अ स्पिरिचुअल पर्सन and I am understanding
understanding a life from a different point of view. So to start with, I would always say that to start with, you can enroll for the basic program of practitioner program, कि जहाँ पे you will get lot of ideas clear. And with that practitioner program, what we do is we work on yourself, we work on your past. आपका जो भी कोई पास्ट है उसको क्लियर किया जाता है, आपके प्रेजेंट में सारी जो चीजें हैं, सारे जो बिलीफ्स है वो इंस्टॉल किए जाते हैं. एंड वी आल्सो डू अ फ्यूचर पेसिंग. सो इट वर्क्स ऑन योर पीपीएफ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों के ऊपर काम होता है. एंड नाउ यू आर रेडी बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट योर ओन लाइफ, you are aware about what exactly you want in your life. Now you are ready to take action. और ये सब करते करते even after say within say 15 to 20 days or at the max 1 month, if you do a practice and all, you start getting your clients, you start making money by coaching people, you start making money by helping people. And that is where you get a certification. And this certification what I provide is from the American Board of NLP, which is one of the largest body in the world और द एनएलपी एजुकेशन. तो उसके जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स है ऐसे गिने चुने पूरे भारत में 25 या 26 लोग हैं. आई एम वन ऑफ देम. So very few people are there who can certify you as trainer. Whatever you are learning, I would always say that learn from the source, learn from the authentic source. I'm not saying you come to me, you go to any other trainer who you feel suitable, who you feel comfortable, but learn from an authentic person कि जिसके खुद के कुछ credentials है. Secondly, those people who want to only focus on money, as I said, I have got a product known as Neuro Money Gym कि जहाँ पे it's a 4-month coaching कि जहाँ पे we only work on money aspect of it and nothing else. Of course, after this 4 months, there is a lot of journey, hand holding. So monthly meetings and weekly meetings, all these things are a part of that, are a part of NLP practitioners as well. So once you get connected, there is a lifelong association. There is nothing like that. Now the course is over. Now you are on your own. You have got my direct access throughout the life. Whatever challenges you are facing, wherever you are facing some difficulty whatsoever, I'm always there to help you. Baki, if you want to connect with me, we are going to provide a link in the description of a link tree so that you can connect. Click on that link. All my social media handles, may it be my Facebook, Insta, YouTube, my Gmail. And if you want to connect to the communities of NLP practitioner or a Neuro Money Gym, whatever, you can connect. Please click on that particular tab and you will be redirected to that particular WhatsApp group. You will be redirected to the YouTube or a Facebook, whatever is there. All those links are there in one single link. So just click on that link and then you will be getting connected with me. Me or my team would be more than happy to help you. And we conduct online programs, we conduct offline programs. We will be keep posting on all these social media platforms. So you get to know what the things are there. Great, sir. Sir, it was really great talking to you. And एक बार मैं फिर से योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो भी ये वीडियो, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर योगेश जी से. He is internationally certified NLP trainer and transformational leader with a PhD, with 20 years of rich experience from HR to certified NLP trainer, coach, author, and public speaker. Sir has trained more than thousands of people, transformed their lives, and taken 100+ training programs for diverse audience. It can be from corporate to professionals to healthcare workers, educators, and entrepreneurs. So if you are interested, if you are looking for guidance, if you are looking for any information regarding NLP, or even you want to learn NLP, you know the person, you know the access, you are able to see the footer. इसमें सर का कॉन्टेक्ट डिटेल्स है. यू कैन कनेक्ट विद सर एंड जैसा सर ने बताया, दे विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू आउट. सो सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने बहुत सारी चीजें बताई, बेसिक लेवल से बताया, और कुछ पॉइंटर्स भी आपने जो बताए दैट शुड हेल्प एन इंडिविजुअल ऑल्सो जो एनएलपी में सीखना या ट्रेनर नहीं बनना चाहता, बट दे कैन इंटीग्रेट दैट थिंग इन देयर पर्सनल लाइफ. एंड जिस तरीके से आपने बताया, यस डेफिनेटली एनएलपी के लिए इंटरेस्ट मेरे ख्याल से सबका जागेगा. एंड जैसा आपने बताया, यस इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस जो बता रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट गोना एड अप अ चेरी ऑन ए केक. तो वो एक एडिशनल एडवांटेज रहता ही है. एंड रियली सर, पर्सनली मेरे को आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हम आगे भी और माइक्रो सेशंस लें और अलग अलग सब टॉपिक्स पे बात करें. Definitely. It's pleasure to be with you today, and I hope the viewers
must have got some insights, and whatever additional you want to know, you put it into comment, and we will be more than happy to shoot one more podcast for you on your problem. Great, 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 sir. Thank you So very much.